صلوا على محمد وعلى محمد. السلام علیکم. ہونہار بیوہ کے چکنے چکنے پڑا میں چھوڑوں تقریب کر اس فضلت جلیل عباس رضا کو دل کی گہرائیوں سے صدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اس کی موسم امین پر ان کے والدین ان کی ساری فیملی اور کے خصوصاً محسن مقدم مولانا تنویر حسین کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نگار کے سائے میں اسی طرح بچے ترام کریں اس فیملی کے لیے خدا امتیاز بنے رہے دور بھیجیوں میں ڈالے ہوں. اللهم صل على محمد. مجھے مرکبت کے لیے میں اپنی ذہین اور کمزور آواز کے ساتھ حاضر ہوں. جیسا بھی پڑھا جائے گا آپ یہ دیکھیں میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ نہ دیکھیں میں کیسا پڑھ رہا ہوں ضرور میری عمر آ رہی ہوں. خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا اس کی خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا اس کی علی بھی ایک صفت ہے صفات ہے جس کی وسیلہ چاہیے وسیلہ چاہیے جن کا یہی ہے پاسوں تن محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن. وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی بو ملے جس کے نشے میں حسن امامت کی بو ملے آدم کو جس سے کوئی ہوئی آبرو ملے میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا رو ملے وہ میں پلا کے جس میں تبادل کا ظہور ہو وہ میں کہ جس میں آل محمد کا نور ہو. تیرا عشق علی ہے یہ راہ عام نہیں تیرا عشق علی ہے یہ راہ عام نہیں تیرا عشق علی ہے یہ راہ عام نہیں مقصروں کا یہاں اس لیے قیام مقصروں کا یہاں اس لیے قیام نہیں یہ کہہ کے حکم علی سے پلٹ گیا سورج یہ کہہ کے حکم علی سے پلٹ گیا سورج خدا کے دین کی قسمت میں اب سے کام نہیں خدا کے دین کی قسمت میں اب سے کام نہیں اور اسی لیے ہمیں جنت پسند ہے کہ وہاں اسی لیے ہمیں جنت پسند ہے کہ وہاں علی علی کے سوا کوئی کام نہیں اسی لیے ہمیں جنت پسند ہے کہ وہاں علی علی کے سوا
अशर वो जाने और करब जाने बरोद अशर वो जाने और करब जाने मुसहरियों से उलझना हमारा काम नहीं मुसहरियों से उलझना हमारा काम नहीं तो बता रहे हैं ये सीने पे दाग मातम के बता रहे हैं ये सीने पे दाग मातम के बता रहे हैं ये सीने पे दाग मातम के हमें हुसैन से उल्फत बनाए नाम नहीं हमें हुसैन से उल्फत बनाए नाम नहीं बुझा सके ये हवाओं में तुम कहाँ रखा बुझा सके ये हवाओं में तुम कहाँ है वफा चिराग आले नबी है चिराग शाम नहीं चिराग आले नबी है चिराग शाम नहीं बरोज हशर वो जाने और करब जाने बरोज हशर वो जाने और करब जाने मुसहरियों से उलझना हमारा काम नहीं Inshallah, we'll pause for the cake cutting ceremony, and inshallah, right after that, we will proceed with the speeches. First, it'll be young Sarah who will be giving a speech, and then we'll have Denise, and then inshallah, thank the Lord from. Inshallah, we'll cut the cake. Do we have a knife? Yeah, there. अरे मूवी तो खुद बना अब्बास थोड़ी सी इधर हो जाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद But this came out nice. आ रहा है तू हाँ चलिए तुम ही चलिए No, no, it's okay. जाओ जाओ I actually started the speech. I didn't get to answer. Abbas, look here. Abbas. सारा
मैं लोगों से बोलूँ कि anybody wants to have picture? हाँ वो मिलकर केक है ना? अच्छा हाँ हो गई ना अब तो सारा कुछ बुला लो ये होता रहेगा यहाँ पर बोलिए अभी कॉल करेगा सारा आईपैड लेके आ बेटा अपना Right, thank you very much. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Please settle down, inshallah. We will continue with the program. We will move from the poetry section now to the speech. And to start us off, we will ask the young Sarah Mid to come and speak, inshallah. Please welcome her with lots of love. सारा चेयर पे खड़ी चेयर पे My name is Sarah Fatima Najeeb and I am Abbas' sister. It's a proud moment for our family that Abbas finished his Quran at the age of 7, mashallah, and made a all of us proud. Let me tell you the things Abbas and I do together. Number 1, we fight. Number 2, we play on electronics a lot. And number 3, we go to fun places together. Basically, we are twins. When I started my Quran, I wondered when is Abbas going to start and finish his Quran. Well, mashallah, he finished at the age of 7, almost 8. Please give him a loud salawat. Mama and Mommy and my mom expect me to be a role model to Abbas, but he prefers to be his own role model and do good deeds himself, and I'm okay with that. All I want him to do while growing up is be respectful to others, always be a good person, and inshallah, we hope that he will choose a successful future and help others too. I thank you for listening to me and hope that everybody is enjoying this joyful moment. Thank you very much, Sarah. That was profound and very honest. Inshallah, with that, we will move forward. And I would like to humbly request Maulana Sayyid Hassan Rizvi to come and speak to the gathering. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. good huh السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أرسل الله عنهم الرزق وكافرهم الخلق في الدعاء मुझे बहुत खुशी है कि मेरे नवासे ने कुरान खत्म किया और बहुत अच्छी तरह पढ़ा और जब मैं पढ़ा रहा था मैंने महसूस किया कि मैं बहुत शीन खाफ लहजे के साथ दुरुस्त लहजे में जैसे कुरान में रब के लिए कुरान तफसीला कुरान को बहुत ही ठहर करके उम्दा अंदाज से पढ़ो तजवीज़ के माना ही है कि खूबसूरत अंदाज में कुरान को पढ़ना कुरान पढ़ना पहला मसला है जिसपे हमारे बहुत से लोग अक्सर जब मैं सुनता हूँ और यासीन की तिलावत तो अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं बड़े बड़े लोग मुझे अफसोस होता है कि उनकी तवज्जो उनकी नहीं है तो जहन में बैठा हुआ है उसके मुताबिक वो तिलावत करते हैं कुरान की तरफ बहुत कम तवज्जो है और चीज़ों की तरफ है लेकिन कुरान की जानिब मजमून है कुरान इसी के क़यामत के दिन कुरान में एक आयत है तो हुज़ूर फरमाएंगे या रब से
इन कौम इत्तखज़ू हाज़ा कुरान महजूरा, परवरदिगारा मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को तर्क कर दिया था, कुरान को निगलेक्ट किया है, नजरअंदाज किया है, कुरान को दरपुरे इतना नहीं समझा, आपने तवज्जो नहीं जाना, जबकि कोड ऑफ लाइफ है, हमारी रोजाना की जिंदगी में कुरान का दखल है। कुरान हमारे सिरहाने होना चाहिए, हर वक्त हमें कुरान से ताल्लुक़ होना चाहिए, कुरान से तमस्सुक होना चाहिए, कुरान से इश्क होना चाहिए, कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए, कुरान से हमारा राब्ता होना चाहिए, कुरान से हमारा रिश्ता होना चाहिए। हमें कुरान को अपनी ज़िंदगी के लिए हिफ्ज़ जान बनाना चाहिए। कुरान पढ़ने के आदाब ये हैं कि सबसे पहले ज़ाहिरी अल्फाज की तिलावत है और उसके बाद से कुरान के मफ़हूम को समझना है और मफ़हूम को समझने के बाद उस पर अमल करना है। कुरान के बारे में ज़ाहिर है कि बेहतरीन अंदाज में वही बता सकता है जो वारिस कुरान हो, जो मुहाफ़िज़ कुरान हो। किताब में ये बात है ना, फिर हमने कुरान का वारिस उन्हें बनाया, इन्हें अपने बंदों में मुस्तफ़ा बना दिया। जो मुस्तफ़ा बनते हैं, मुर्तज़ा बनते हैं और मुश्तबा बनते हैं, तो कुरान के वारिस हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से बेहतर कौन होगा कुरान को समझाने वाला, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अली मन कुरान व कुरान माली, अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ हैं। तो कहा है किताब रब्बे को फिक्र, ख़वातीन से भी गुजारिश है कि कुरान के बारे में गुफ्तगू हो रही है तो तवज्जो करें और सुने, इसलिए कि इस वक्त गुफ्तगू है, इसको सुनना उनके लिए बाइस शरफ भी है, बाइस फजीलत भी है, और जब सुनेंगे तो उसका फ़ायदा भी उनको इंशाअल्लाह होगा। कुरान कहता है किताब रब्बे को, ये मौलाए कायनात फरमाते हैं किताब के बारे में। कुरान इसलिए कहते हैं कि पढ़ा जाता है, किताब इसलिए है कि लिखी हुई है, नूर इसलिए है कि रोशनी है, फुरकान इसलिए कि हक़ व बातिल के दरमियान फर्क है, मौइज़ा इसलिए है कि नसीहत है, बसाइर इसलिए कि बसीरत है, बयान इसलिए कि हर चीज़ को पहुँचाता है। तो कुरान जो है वो मुकम्मल मौइज़ा है, इसी के बाद वो नसीहत है। फरमाते किताब रब्बे को फीकुम, कि तुम्हारे रब की किताब तुम्हारे दरमियान है, वो भी ये न हलाल हो हराम हो, ये हलाल और हराम को वादे करती है, तो फराज व फदाइल हो, फराइज को फदाइल के बयान करने वाली है, इसमें नासिक भी है, मनसूख भी है, तो तमाम चीज़ें वादे अंदाज में बयान की गई हैं। फिर एक जगह फरमाते हैं कुरान के बारे में, मौलाए कायनात का इरशाद है, दूर पढ़ कर मोहम्मद इंदल कुरान, ये खुतबा नंबर 18 में फरमाते हैं इंदल कुरान ज़ाहिर वली, कुरान का ज़ाहिर निहायत खूबसूरत है। कुरान की खूबी है कि जितना आप तिलावत करेंगे आपको लुत्फ़ आएगा, आपको मज़ा आएगा, यूँ महसूस होगा कि आयत आज ही नाज़िल हुई है, यह अभी इसका नुज़ूल हुआ है। कुरान की ज़बान कभी फरसुदा नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती, कभी उसमें कोई ऐसा नहीं होता के साथ महसूस इंसान राहत करे या इंसान घबरा जाए, बल्कि जब भी पढ़ता है हमेशा उसमें ताज़गी और नयापन महसूस होता है। मौला फरमाते हैं कुरान का ज़ाहिर खूबसूरत है, बात बहुत उम्दा है, गहरा है, और इसके अजाबात कभी फना नहीं होते, इसमें जो नई नई बातें हैं उनमें कभी खत्म नहीं होती। वला शहुद्दुलमात लबही, तुम इसी के जरिए अपने सारे अंधेरों को दूर कर सकते हो, शिर्क का हो, कुफ्र का हो, निफाक का हो, जितने भी अंधेरे हैं, जुल्मतें हैं, जितनी भी जुल्मतें हैं, डार्कनेस है, सबको अगर दूर करना है तो कुरान का नूर है जो हमें पुरनूर बना सकता है, मुनव्वर और फरोज़ा कर सकता है। कुरान के बारे में फरमाया वअलमू वतअल्लमुल कुरान, तुम कुरान का इल्म हासिल करो, फिन्नहु अस्लुल हदीस, कुरान बेहतरीन बात है, बेहतरीन हदीस है, वतफक्कहू फीह, और इस पे समझ बूझ हासिल करो, फिन्नहु रबीउल कुलूब, दिलों के लिए बहार है, वस्तशफू बिनूरिही, इसके नूर से तुम शिफा हासिल करो, क्योंकि ये सीनों के लिए शिफा है, इससे कीना, गोग, हसद, जेलसी, जितनी बुराइयां हैं सब कुरान के जरिए दूर हो जाती हैं। वअहसिनु तिलावतहू, और अच्छे अंदाज में इसकी तिलावत करो, फिन्नहु अनफउल क़सस, ये फायदेमंद सूदमंद किस्सा है। अंदर आलिम अगर कोई आमिल बगैर इल्म के अमल करता है वह आलिम जैसे जाहिल है, तो हैरान है। ये कुरान बेहतरीन हुज्जत है, लिहाजा कुरान से हमें तवज्जुह करना चाहिए। आखिरी बात इमाम फरमाते हैं मौलाए कायनात कुरान के बारे में, वअलमू अन्ना हाज़िल कुरान वन्नासु लिल्लाहि, कुरान ऐसा नसीहत करने वाला है जो कभी धोखा नहीं देता,
कभी धोखा नहीं दिया, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। और फातिल लजीला युज़िल्लु, ऐसा हिदायत करने वाला है जो गुमराह नहीं करता। और बहुत ऐसा प्यार करने वाला है जो कभी झूठ नहीं बोलता। कुरान जब भी कोई कुरान के साथ बैठता है तो बैठे के बाद दो चीजें हैं कि उठता है, ज्यादती होती है या कमी होती है, हिदायत बढ़ती है, गुमराही घटती है। मोहम्मद कहा कि देखो, तुम कुरान में सबसे बड़ी जो इंसान की बीमारी है उसका इलाज कुरान में है। वो बीमारी बताया कुफ्र की बीमारी है, निफाक की बीमारी है, गुमराही की बीमारी है, बेराहरमी की बीमारी है। इस सारी बीमारियों का इलाज कुरान में मौजूद है। लिहाजा कुरान पढ़ो, इन बीमारियों से निजात पाओ। इन्नहु शाफिउन व शफ़ा, कुरान शफाअत करने वाला है, रोज़े जज़ा इसकी शफाअत कबूल की जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कुरान पढ़ें ताकि इसकी शफाअत रोज़े महशर हमें मैसर हो। कुरान एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आएगा जब सारे शफाअत करने वाले खामोश हो जाएंगे, कोई मौजूद न होगा, तो कुरान जो पढ़ता होगा कुरान आगे बढ़ेगा कि परवरदिगारा मैं इसे निजात दिलाऊंगा क्योंकि मेरी तिलावत करता था, मेरी बातों पर अमल किया करता था। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मोहम्मद very much. That was Maulana Tilmiz. Thank you very much for those words of wisdom. Those who were paying attention, definitely they will benefit from it. I was asked to speak at the end, and inshallah I will try to be as concise as possible. 10 minutes at least. That was the instruction given to me. I've been sharing various ahadith on and off in between every reciter. So I have spoken my share tonight and today, but nonetheless, just because the request was there, I will try to, it's very difficult to recite after Maulana, but nonetheless. Please send Allah salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we are all gathered in this beautiful gathering, which is a gathering of Khatm al-Quran, finishing of Quran, completion of Quran, known as Ameen. There are many lessons that we can derive from this. One, which I usually mention in these occasions, is that it is important for us to hold such gatherings. It shows importance and gives importance to not only the Holy Quran, which requires no importance, but the person who has done such a hard work, endeavored in the past few years to finish this, the recitation of it. So it does become a culture and gives incentive to other youngsters who are still going through the process and in the process of finishing the Holy Quran. When they'll look at someone who finished their Quran is being offered such a gathering, then they'll have incentive as well to go ahead and do the same thing as soon as possible. So it is a good encouragement for those who organize such events. So I'm very thankful to the parents of Abbas who thought of this, that it is indeed an occasion which is worth celebrating. Number two, when a person finishes Quran, and Maulana hinted towards it as well, and I'll emphasize a little bit more on it, that's just the first step. Then when you start reading and when you finish, it's just the first step. That's when the second step and the real process begins once you finish the Quran.
One thing is a recommendation for all the parents who are going through the process of having their children finish the Quran. Don't be in competition to finish it quickly or before anyone else does. Because that defeats the purpose and the essence of this holy book. Make sure they take their time to finish it and recite it properly. The more time they'll take, the foundation will be just as strong. So make sure that their foundation is strong. And when they finish the first time, it should not be that you close this Quran and put it away and never open it again. Make sure the process continues, that they finish it the second time, the third time, the fourth time, the fifth time, and they continue on reciting it. And then comes the step of understanding this book. Allah subhanahu wa ta'ala revealed this book to us not just for recitation. He revealed it for contemplation. He revealed it for pondering. He revealed it so that we pay attention to the words of this holy book. It is a means of guidance for us. Mulana recited it as a shafa'at for us. And all of these things are hidden treasures of Quran. I heard a story, or I read it in another place, that there was a grandfather who had this habit of reciting the Quran on a daily basis. As usually the elderly have this habit in every home, that they wake up early in the morning, after namaz, they'll sit down and they'll recite a few pages, maybe a chapter, maybe a para, and so on and so forth, depending on their ability. They'll recite some Quran. It's a good habit. His grandson, who saw him do this every single day, he said to his grandfather, "You don't understand Arabic, yet you recite this book every day. What's the benefit of it? You don't understand a word." And that's a very important and good critique, because you should be able to understand it as well. Nobody has the excuse today, because we have the translations available in all the languages. All the languages that you and I know. But grandfather knew where his grandson was taking him. He was telling him, what's the benefit of reciting it every single day? You open this book, you recite some chapters, passages, and then you close it. Sort of have become your habit. What's the benefit of it? He knew that this grandson of his, because of his age, he speak to people based on their intellect. He said, if I gave him some logical, philosophical, or if I recited a hadith from the Kalam of Ma'asumin, it may not have effect on him. So he spoke to him at his own level. He said, grab a basket, not a bucket, a basket. Usually a basket is where you put, logs of wood and all that stuff. So there was a basket sitting where there was some, coal and there was some wood in it. He said, grab this basket, go to the lake which was right in front of their house and fetch some water in it. First of all, he looked at the basket. It's a basket. How would I be able to grab any water in it? Give me a bucket? Yes, I'll go get it. But a basket? He said, no, go ahead and do it. So he grabbed the hold of this basket. He runs to the nearby lake. He dips it under the water. All the water drains out. And then he runs back home. He said, I'm not going to be able to get any water. He said, you should try harder this time. Maybe he thought there was some wisdom behind it. So he went back again. He repeated the process. Came back. Again, no water. Third time he said, this time he was very tired. He said, why are you making me do this? He said, try harder. See if you're able to bring anything back. This time he really sprints, runs as fast as possible, goes to the lake, dips it under the water, and runs as quickly as he can. But upon returning, obviously, all the water had already drained from the basket. How would it stay? It's a basket. Grandfather then said to him, he said, there's no use. I won't be able to bring any water to you. He said, I don't really want any water. Now look at the condition of this basket. When he had picked it up earlier, it was dirty. There was logs of wood and coal in it. And after having dipped it under water 3 times, it is clean and pure. He said, yes, you may not have been able to gain any water and bring any water in it. But in the process, inadvertently, you were able to cleanse this basket.
Yes, I may not understand the words of Quran. I may not understand Arabic. But every time I recite it in Arabic, it brings this purification and cleansing of the heart. Yes, if I was able to understand the meaning of it, it would be nurun ala nur, which is important to go ahead and read the translation as well. And if you have more interest, go ahead and read the tafsir of Quran as well. These are life lessons that we must adhere to and adopt as far as our life is concerned. This is a book which is a code of conduct. There's history in it, history of previous prophets. There are ahkam in it, and there are, many anecdotes and examples for us. But unfortunately, what is the usage of this Quran? When Ameen is done, you bring the beautiful Quran. When someone is traveling, you make them pass underneath this Quran. When someone is getting married, you go ahead and give him a hidiyah of Quran. When someone dies, you go ahead and open this Quran and you recite Surah Yasin. That is the only usage of Quran, unfortunately, in our societies these days. Whereas we see our societies, they are doing seminars on Quran. They are, holding classes in Quran, and there are many other stuff that is going to be done. We keep Quran on the highest of the shelf so that children don't reach it and, God forbid, do some sort of bi-ihtirami towards it. But it remains in that top shelf, dirtying and gathering, dirt upon it, so that maybe one day you may have to do tayammum from it. There's no other use, unfortunately. So my inner and my in-depth and my, humble request to everybody who's present over here, if Quran is not recited on daily basis, remember that hadith that I had recited earlier. Takthuru barakat. By the recitation, barakat increase. If you see that barakat and the blessings are decreasing in your house, probably has to do with Quran. So make sure that you get in the habit of reciting at least 5 ayat if it's possible, or at least 50 ayat, which will be the best. Because we have read in the narrations of Ma'asumeen to recite at least 15 verses of Quran on daily basis. These days you don't have any excuse. Everybody has these gadgets, you have Quran on it. You don't have to have wudu. It'll be good if you do it, if you're using the actual Quran. But if you're using your phone or other gadgets, you don't need to have the wudu. You can just recite the Quran and you will understand the benefits that you can gain out of it. And last but not least, when you finish the recitation, make sure that you give this as hadiyah, as a gift to Imam of your time, Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Because at one point it is our amal, may be accepted, may not be accepted. But as soon as it is associated with Imam al-Hujjah, definitely that amal will be accepted. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us a tawfiq, a strength to be able to read, recite, ponder, contemplate on this book of Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give Abbas strength to be able to continue to recite the Quran and inshallah understand it better. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the zuhur of our rated Imam and make us amongst the helpers and the soldiers of the Imam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Now I would like to request Jafar Mehdi to come and say a note of thank you to the audiences before we proceed towards dinner, inshallah. Jafar bhai. Jafar bhai. Can someone call him? Assalamu alaikum everyone, and thank you for joining us for this special occasion for Abbas Raza, the Quran completion.
this time we very thankful for God. He gave us that time, and I request everyone to do say salawat to Abbas Raza. Also, please recite the Surah Fatiha with grandparents and my parents. Thank you. Assalamu alaikum. Inshallah, dinner will be served in a couple of minutes, so just bear with us for 2 more minutes, and inshallah, dinner will be served. Once again, let's welcome Hadi Raza. Inshallah, he'll fill in for a couple of minutes that we have. Assalamu alaikum again. I wasn't ready for another one, to be honest. Salawat. मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे 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 खुदा की कसम है इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे निकल कर अंधेरों के नरगिस हर जब दरेशे परा